Okay, now I can see the video. Okay, students, good afternoon. Welcome back. So let's talk about electricity आज के सेशन में, which is for class 10 students. CBSE board science subject chapter 12 we are doing. Term 2 का chapter है ये for science subject. And electricity का आज हम last topic cover करने वाले हैं, and that will end the chapter. So today we are doing electric power का topic in this. Okay, so wait, what is happening to this video? Yeah, I think it's fine. Or is it buffering? 1 minute. 1 minute, just let me check the network a little. I hope you can see the audio and video. Is it clear for you? Let me know. Okay. ठीक है, मे बी थोड़ा टाइम में क्लियर हो जाएगा. Right now it is buffering for me, but I think it will take care of its own. 1 minute. फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं. I hope the network is good. Okay students, just let me know in the comment section अगर आपको clearly दिख रहा है video. Okay. बार बार बफर क्यों हो रहा है? ठीक है, I will continue and I'll see in 5 minutes फिर से 4-5 minutes में कैसे हो रहा है. So in the meantime, I'm not able to see the chats also. So अगर if you're writing some message, I'm not getting it. Okay, so let me start with the topic for today, जो है electric power. So in this topic, electric power का मतलब क्या है? Obviously, we are studying about electricity. So electricity में electric power means what? It is obviously the power consumed. It is a power of any electrical appliance. अगर हम बात करें for example के ठीक है, मुझे एक 10 watt का बल्ब चाहिए या I need a 100 watt bulb. You know, this is how we distinguish between the type of bulbs you want. तो ये क्या होता है? What is this 10 watt, 100 watt and all these things? ये watt जो है यही बताता है about the power of the bulb, power of the appliances. ओके, तो अलग अलग अप्लायंसेस जैसे हैं, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, देन फैन, टीवी, गीजर्स, एयर कंडीशन, ऑल ऑफ दीज अप्लायंसेस दे कंज्यूम पावर एंड ये सब इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं ना, दैट्स व्हाई दैट पावर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. हर अलग अलग अप्लायंस अलग अलग इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा. लेकिन व्हाट इज दिस पावर, क्या है ये? तो इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे and then we'll understand more about it. ठीक है, तो let me show you this video and इसमें हम देखते हैं पावर का एक्सप्रेशन भी देखेंगे. So heating effect of electric current नहीं करेंगे हम, फिर से ये पिछले सेशन में we have done.
So I will start from power wala topic. Okay, yes, should be here. So what is power? Power की definition सबसे पहले क्या है? Power can be defined as the rate of doing work or the rate of consumption of energy. देखो power हमने पहले भी पढ़ा है when we studied about work and energy. In that we have studied about, so we can say work upon time, or we can say rate of the energy spent. But now because we are saying about electric power, तो वी विल से द सेम थिंग, बस इसमें हम जो एनर्जी है वो क्या होगी, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, so here for electric power we will say electric power, it is defined as a rate of doing work or the rate of consumption of electric energy. कितनी रेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है. Okay, और ये rate of doing work, work means here what is the type of work we are speaking about. So if we have for example ये कोई भी ये bulb है, okay, and there is a battery and this is connected here, ये switch है for example, तो ये current pass हो रहा है. ठीक है, when current is passing, so for this current to pass through this, ये appliance को, ये बल्ब को चलने के लिए, जलाने के लिए we need to switch it on. और जब switch on करते हैं तो there is some work done. Work done for what? Work done for moving the electrons in the circuit. क्योंकि electrons जब move करेंगे तभी तो current pass होगा from the through that appliance. So that is the work. And who is doing this work? This work is done by, in this circuit it is this battery which is doing the work. या जो भी electrical source होता है, that is doing the work. Okay, so electric power, power सेम ही है जो हमने पहले पढ़ी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक हम इसमें जोड़ देंगे. Power is defined as the rate of doing work or the rate of consumption of electrical energy. Okay, अब हम इसका डेरिवेशन, so इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक वर्क का. Okay, let's see that. Okay, I think now the video is smooth. Yes. So I am saying that it is what the rate of doing work in electrical terms. Work done हमने पढ़ा है कि ये वर्क डन अभी कौन है, ये बैटरी का. बैटरी का हमने पढ़ा है. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में वी हैव लर्न्ड दैट पोटेंशियल डिफरेंस V is W upon Q, right? Work done in moving unit charge. So from this expression what will we get? W is equal to V into Q. अब Q हमने करंट का भी एक्सप्रेशन पढ़ा है. बाय डेफिनेशन व्हाट इज करंट इक्वल टू? बाय डेफिनेशन वी नो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. I is Q upon T. So if I have to rearrange this, तो Q क्या बन जाएगा? Q is equal to I into T. So here I can replace Q with I into T. तो मेरा वर्क डन हो गया VIT. ठीक है, ये वर्क डन बाय द बैटरी, या फिर वी कैन से द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड या विच इज एक्सपेंड, दैट इज इक्वल टू V into I into T. What is V? V is the potential difference across the 2 points. I is the current passing and T is the time for which the current is passing. ठीक है, तो अब हम इसको VIT को अगर I substitute it here, तो what will I get? Power will be equal to W की जगह पर VIT डाल देंगे, upon time लिखना होगा because power is rate of doing work. So what will I get from here? From here T हो जाएगा cancel and I am left with P is equals to VI. ये देखो, this is the expression which we got for electric power. क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर है इसलिए यहाँ पे we have voltage and current, इसके टर्म्स में हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है. ओके, सो नाउ लेट्स सी इसके हम और भी फॉर्मूला लिखते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये कैसे मिला है. P is equals to VI. This is the basic formula for electric power. Now let's derive some more formulas knowing the Ohm's law.
So in any circuit, if I know the value of V and I, तो अगर ये मेरा अप्लायंस है, ठीक है, फिर से बना देती हूँ, बैटरी एंड की या स्विच, दिस इज द करंट। तो इसमें पावर कंज्यूम बाय द अप्लायंस आई कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ आई नो द वोल्टेज एंड द करंट पासिंग थ्रू इट। लेकिन अगर मुझे V और I नहीं पता, इफ आई नो V एंड R, ओके, तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। कैसे? इफ आई हैव टू रिमूव दिस I फ्रॉम हियर, तो फ्रॉम ओम्स लॉ आई नो I is equal to, what is I equal to from Ohm's law? V1R, V upon R, okay? So in place of this I, अगर आप substitute कर दो V upon R, तो what do we get? V into V upon R, यानी कि मुझे मिल जाएगा V square upon R। So देखो, ये इसका पहला फॉर्मूला था VI, now I got one more, that is V square upon R। अगर मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता, इफ आई नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, देन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। Now if you say I don't know the potential difference, if I know the values of current and resistance, तो मैं पावर कंज्यूम कैसे फाइंड करूंगी? So I have to get rid of V from here। I V के फॉर्मूला में V को हटाना है। तो from Ohm's law I know that V is equals to I into R, ओके। अब इस बेसिक फॉर्मूला में P is equals to VI में you put in place of V, put IR, or you can put here also, it's one and the same thing, but ये थोड़ा छोटा है इसलिए I'm putting it here। V की जगह पे IR into I, तो मुझे मिल जाएगा पावर is equal to I square R, ठीक है। तो देखो हमको कितने मिल गए? 3 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे। One is P is equals to VI, one is P is equals to I square R, and the third one is P is equals to V square upon R। So when you're doing numericals, तो you can see कि आपको क्वेश्चन में कौन से टाइप का डेटा दिया है। Using that you can decide कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, दिस इज डन। फॉर्मूला तो हमने देख लिए। नाउ लेट्स सी कि इसका यूनिट क्या होगा। दैट आल्सो वी हैव टू सी। पावर का यूनिट क्या होगा? सो पावर का यूनिट हम फॉर्मूला से अगर फाइंड कर लें, सो V is, we know it is volt, and what is the unit of current? Ampere। So the unit for electric power का यूनिट क्या होगा? Volt into ampere, or this is more popularly known as watt, ठीक है, watt, in honor of James Watt, who was the inventor of the steam engine। तो उनके ऑनर में इसको यूनिट को बोलते हैं watt। So the unit of SI unit of power अगर पूछेंगे तो we have to write watt। So after this you have one more definition, बहुत important। एक तो हो गई important definition electric power की, then you know the different formulas, then I told you the SI units, okay। लेकिन इसके बाद अब definition, if they ask about 1 watt की definition, वो क्या होगी? तो इस definition को कैसे बनाएंगे? So we will make this from this formula itself। So if I have to say the power is 1 watt, what I'll do? Power की जगह पे 1 watt लिखो, V वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट, एंड करंट I की जगह पे 1 एम्पियर। अब इस एक्सप्रेशन से you can make the definition for 1 watt। So what will it be? Watt यानी WHAT, watt, not this watt, okay। So what will the definition of 1 watt be? The definition will be 1 watt is the power consumed by the appliance when 1 volt of PD, when the PD across it is 1 volt and the current consumed by it is 1 ampere, ठीक है। That will be the definition। तो ये हो गई 1 watt की definition। Let me show you here, यहाँ पे देख लेते हैं।
So here they have again shown you different formulas for power which you can use. SI unit of power हो गया watt. But yes, when you are writing the complete word, तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है. You have to write this way. Yes, this one you can write capital because this is after the name of a scientist, in the honor of the scientist. So we can write this like this. Up next is 1 watt. 1 watt is 1 volt into 1 ampere. So we can define 1 watt as power consumed when the potential difference across the circuit is 1 volt and the current passing through it is 1 ampere. Okay, is it clear till here? 1 watt is clear. Lekin, okay, before coming to electrical energy, watt SI unit is watt, but we also have some bigger units. Bigger units we can use. Bigger units कौन से होंगे? Kilowatt, you can say, or you can say megawatt. Okay. तो मोस्टली किलोवाट इज गिवन टू इन द सिलेबस. किलोवाट और वाट का रिलेशन क्या होगा? जो सारे किलो का रिलेशन होता ही है. सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. तो ये हो गया बिगर यूनिट ऑफ पावर. ठीक है. देन आफ्टर दिस वी विल सी. ओके, नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी? वी हैव सेड के पावर अरे 1 minute. Okay. Yeah. Power is the rate of doing work या the rate of consuming electrical energy. है ना? Work done और electrical energy equivalent होते हैं because जब भी whenever work is done, electrical energy is spent in doing that work. So I can write electrical energy upon time. तो इस equation को अगर आप rearrange कर दो तो electrical energy equal to what? Equal to क्या मिलेगी हमें? E is equal to electrical energy is equal to, just rearrange this, you will get PT, power into time. And that's why how will we define electrical energy? It is the product of electrical power and the time for which that appliance is used. So electrical energy, so what will be the SI unit here? Formula तो आप समझ गए. I told you E is equal to PT, or we can also write this as power का क्या था formula? Basic formula VI था. So I can also write that the electric energy is equal to VIT. ठीक है. So what will be the SI unit for electrical energy? एनर्जी ही है एक टाइप की. सारी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वेदर इट्स हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, यूनिट फॉर एनर्जी इज ऑलवेज जूल. तो यस, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है. एसआई यूनिट विल बी जूल. ओके, बट जब हम एक्सपेशली व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस we will use another unit. कौन सा? ये देखो, E is equals to PT से अब appliances they consume power in what in कौन सा यूनिट? मैं वॉट नहीं बोलूंगी अभी, क्योंकि ये जो मैं वॉट बोलती हूँ और ये जो वॉट है ये दोनों कंफ्यूज हो जाता है. तो मैं इंग्लिश में इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलूंगी क्या. ठीक है. सो ये पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वॉट्स. और टाइम का एसआई यूनिट क्या है? ये है टाइम का एसआई यूनिट. तो सेकंड होता है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इसको हम आर लेते हैं, क्योंकि इफ आई स्पीक अबाउट अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल, तो ये बल्ब फॉर एग्जांपल कितने आवर्स के लिए जला, या फ्रिज कितने आवर के लिए जलता है, जलता नहीं है, चलाते हैं, या फैन कितने आवर्स के लिए चलता है ना. सो वी डोंट से इन सेकेंड्स, वो एकदम ही छोटा यूनिट हो जाएगा. तो फॉर दैट वी विल यूज आर. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वी कैन यूज दिस यूनिट ऑल्सो. कौन सा? वॉट आर. ठीक है. वॉट आर भी अगर आपको दिया है दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वी ऑल्सो नीड अ बिगर यूनिट, एक और बड़ा यूनिट, इससे भी बड़ा यूनिट चाहिए हमें, क्योंकि वी आर स्पीकिंग अबाउट वॉट. वॉट नहीं, वी आर स्पीकिंग अबाउट क्या?
अगर आप सोचो कि आपको जो मंथली इलेक्ट्रिक बिल आता है, बिजली का बिल आता है ना, तो वो एक मंथ का आता है। तो 30 डेज में या 31 डेज में या 1 मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने, दैट इज काउंटेड एंड दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू गेट योर इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो यू आर कंज्यूमिंग हाउ मच, ये जो electrical energy consumed, that is counted. Okay, electrical energy consumed for the whole month by all the appliances in your house. वैसा तो है नहीं कि there will be only you're just using one bulb in the whole house या one fan. There are so many appliances. बल्ब में होगी, लाइट होंगे, फैन होगा, टेलीविजन है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स, देन washing machine, maybe electric iron and all those things. So that's why ये जो unit है, what are, this also becomes a small. तो इससे भी बड़ा यूनिट हम यूज करेंगे. What is that? That is kilowatt hour. Hi Kim. Kim, good afternoon. देखो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वी विल यूज, क्योंकि हमको पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज करना है. तो पावर इफ आई टेक इन किलोवाट, दैट्स अ बिगर यूनिट ऑफ पावर ना, एंड टाइम आई विल टेक इन आवर्स. सो दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द कमर्शियल यूनिट. दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछते हैं व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन यू विल हैव टू राइट किलोवाट आवर. ओके, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल ओनली, वो किलोवाट आवर नहीं है. इज इट क्लियर? एंड डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. And we will also do some question answers and numericals भी करेंगे, हाँ, to understand this even better. तो किलोवाट आवर का कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसके बेसिस पे हमें जो बिजली का बिल है वो आता है. तो बिजली का बिल कैसे आता है, मे बी आपने मंथली कंज्यूम किया है. लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव कंज्यूम्ड 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 यूनिट कंज्यूम किए आपने पूरे मंथ में, तो ये जो यूनिट होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि यू हैव कंज्यूम्ड 100 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको यूनिट बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी. तो इफ एक पर्टिकुलर रेट होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 2 रुपीज पर यूनिट, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो आपका मंथली बिल कितना आ जाएगा, आपने 100 यूनिट्स अगर कंज्यूम किए हैं, यानी कि सारे अप्लायंसेस का ये टोटल फॉर द मंथ, दैट वे. सो इट विल बी 100, हाउ मच इट विल बी, कैन यू टेल मी? 100 इंटू 2 करना होगा, बिकॉज एक यूनिट का 2 रुपीज बोला है, तो 100 यूनिट्स का हो गया 200 रुपीज. ये तो बहुत छोटा है, ऑब्वियसली इतना कम तो आई डोंट थिंक किसी का बिल आता होगा. सो that's an example which I'm telling you how the electric bill is calculated. Okay, so we will also see numericals भी देखेंगे इस पे. Before that let me see if और कोई important definition है जो हमने skip कर दी हो. Okay, 1 watt hour SI unit. Okay, watt hour नहीं, ठीक है. So let's go back to this one. तो यहाँ पे मैंने important definitions भी लिखी हैं, like electric power. So just to revise a little, and after this revision we will do some question answers, numericals. ठीक है, तो electric power, it is a rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. And we got a standard formula. एक हमने formula लिखा है, basic formula VI, and I showed you also I square R, and third one was V square upon R. Then SI unit of power we have seen is watt. Okay, 1 watt की definition, 1 watt is equal to, because P is equals to VI, so 1 watt is 1 volt into 1 ampere.
So we can define 1 watt as the power consumed by the device which carries 1 ampere current when operated at a potential difference of 1 volt. So, but we also have bigger units of power. Kilowatt, I told you 1 kilowatt is 1000 watts. Then 1 watt hour क्या है? This is electrical energy. Okay, मैं ऐसे ई लिख रही हूँ. Electrical energy. तो इसका फॉर्मूला क्या था? PT, power into time. So power का यूनिट if I take watt and time का यूनिट अगर मैं ले लूँ R. But watt hour is not the SI unit. Okay. SI unit, if they ask you electric energy, you have to write joule only. Watt hour नहीं है. वॉट आर नहीं, क्योंकि हमने टाइम को आवर में लिया है ना, टाइम को सेकंड्स में लेंगे तो ही वो एसआई यूनिट होगा. आर इज नॉट एन एसआई यूनिट. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आर. सो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिमिलरली kilowatt hour is also the unit of electrical energy only, but this we will write when they ask you about the commercial unit. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको किलोवाट आवर ही लिखना होगा. ठीक है. What hour is energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour? So 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed when 1 kilowatt will be used in 1 hour. Okay. So these are the very important terms इसमें electric power में, electric energy, electric power, and that's the end of the chapter. Numericals हम करेंगे. Topic wise, explanation wise, I have done all the topics. So let's do simple examples कर लेते हैं ताकि और भी clear हो जाए. Electric bulb, ये example, this is a textbook example. So let's solve it. Electric bulb is connected to a 220 volt generator. V की value दी है. Current is given 0.50 या 0.5. It's the same thing. What is the power of the bulb? So calculate it jaldi and tell me what's the answer. Power of this bulb will be how much? ये एकदम हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो ही डायरेक्टली यूज कर लो. P is equal to VI. So V is given 220, I is given 0.5. तो आंसर विल बी 0.5 यानी कि हाफ होता है तो 220 का हाफ कर देते हैं. दैट इज 110. वोल्ट एंड करंट दोनों भी एसआई यूनिट में दिए हैं, which means I will write the SI unit of power. So my answer will be P is equal to 110 watt. Okay, got it? Chalo, let's do next one. Another example. Yeah, this is the next example. See, ये जो example है ये करके आप थोड़ा ये समझ भी जाओगे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये कैसे कैलकुलेट होता है. सो यहाँ पे तो एक ही अप्लायंस के बारे में बोला है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बोला है. ठीक है. लाइक दिस यू हैव मेनी मोर अप्लायंसेस इन द हाउस. सो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट. तो देखो एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कम्स विद अ रेटिंग. So if you have seen, if I just speak normally of bulb, for example, so you can see 60 watt bulb, watt and volt, both are mentioned. Okay, that's called the power rating of a appliance, which means, okay, now what is the meaning of this power? ये 60 watt क्यों लिखा होता है? या फिर if this electrical refrigerator is rated 400 watt, what does it mean? When they say it is rated 400 watt, 400 watt, then what is the meaning of this? The meaning is that ये जो refrigerator है that consumes 400 joules of electrical energy per second. Okay, क्यों? क्योंकि you know power is एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम. अब एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल एंड टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड. एंड दिस जूल पर सेकेंड वी आर राइटिंग फॉर इलेक्ट्रिक पावर एज वॉट. सो दिस इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड.
So when the power rating, for example, if the rating of a bulb is 60 watt, तो उसका मतलब क्या है कि in 1 second that bulb will consume 60 joule electrical energy. ठीक है? I hope you are getting it. Okay, so let's see इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है. Rating दी है रेफ्रिजरेटर की and it operates for 8 hours in 1 day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? तो 1 kilowatt hour के लिए I have to pay 3 rupees. सबसे पहले I'll have to calculate के कितने किलोवाट आवर का कंजम्पशन हुआ है by my refrigerator, right? So for this, what is the electrical energy consumed? I will find. Okay, electrical energy consumed. I hope spelling थोड़ा सा correct कर लेना. So electrical energy consumed in 1 day if I want to calculate. एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर? So what is the formula of electrical energy? PT. तो पावर है इसकी 400 watt. Write the units here. It's very important. And time, in 1 day it is being operated for 8 hours. So my energy consumed here will be 8 4s are 32. 3200 क्या? Watt hour. Okay. But I want the electrical energy consumed in which unit? किलोवाट आवर में चाहिए मुझे. तो इसको कन्वर्ट कर दो किलोवाट. वॉट टू किलोवाट कन्वर्ट कैसे करेंगे? That you know, it will be divided by 1000, right? So this will give me kilowatt hour. ठीक है? Okay. So yes. So in 1 day, this is the energy consumed. Now this refrigerator is operating for 30 days क्योंकि monthly bill चाहिए मुझे, monthly consumption चाहिए. So for 30 days कितना होगा? Energy consumed energy consumed in 30 days. Electrical energy consumed by this refrigerator in 30 days will be how much? This is in 1 day. चलो यहाँ पे 0 तो कैंसिल कर देते हैं. 32 upon 10 है. तो this will become 32 upon 10 into 30 कर देंगे, right? So what will I get here? 0 0. 3 2s are 6. 3 3s are 9 kilowatt hour. This much energy is consumed by the refrigerator in 30 days. तो इस एनर्जी कंजम्पशन के लिए what will be the cost which I have to pay? So cost will be 3 rupees दिया है per kilowatt hour. So 96 kilowatt hour के लिए what will be the cost? Cost will be, energy cost will be 96 into 3, right? 3 6 are 18. एंड हमेशा याद रखो ये कॉस्ट फाइंड करने के पहले आपकी एनर्जी किलोवाट आवर में ही होनी चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पावर का यूनिट किलोवाट में कर दो जो भी दिया हो, और टाइम का यूनिट भी आवर में कर दो. इवन इफ इट्स गिवन इन सेकंड्स और मिनट्स, कन्वर्टेड टू आवर्स. ओके, या डे भी दिया है तो. चलो, सो 3 6 are 18, 3 9 are 27, plus 1 28. So this is the answer. Are you getting this answer? 288. ये हो गया कॉस्ट. 288 रुपीज मुझे पे करने होंगे इफ आई एम ऑपरेटिंग माई रेफ्रिजरेटर फॉर 8 hours a day फॉर 30 days. ओके, सो ऐसे ही आप सोच लो कि आपका जो जितनी भी अप्लायंसेस यूज होते हैं वो उनका एनर्जी काउंट कैलकुलेट करते हैं, and then the bill is sent, and that's why it is said, okay, if you don't need, then switch off the lights and fans, because
It's not I mean you have to pay for everything whatever you use, all the energy which is consumed, उसका bill आता है ना month के end में. So better we have to conserve electricity, conserve power, right? Okay, sure. Let's see next one. Okay, ये क्या, हाँ ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक मोटर है, इट टेक्स 5 एम्पियर, करंट इज गिवन एंड वोल्ट इज गिवन. 220 वोल्ट लाइन से वो इतना ले रहा है करंट. डिटरमाइन द पावर. First I have to find the power and then I have to find the energy consumed in 2 hours. Okay, so this is also easy. फटाफट इसकी पावर यूज कर लेते हैं. VI, V is 220, I is 5. So I will get 500, 5 2s are 10, 5 10 plus 11, 1100. यूनिट क्या लिखेंगे, दोनों ऐसा यूनिट में है तो इसका यूनिट होगा watt, right? Next I have to find the energy consumed in 2 hours. Now if you see here they have not mentioned whether ये एनर्जी आपको कौन से यूनिट में फाइंड करनी है. सो इफ इट्स नॉट मेंशन देन और एल्स अगर वो कॉस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स बेटर यू फाइंड द एनर्जी इन द एसआई यूनिट. ओके, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? जूल. ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी कि हमको कौन से यूनिट में मिलती है, उसको फिर हम कर लेंगे उस यूनिट में कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम. Okay, one important thing I forgot to tell you. Kilowatt hour to joule conversion. How did I forget that? 1 minute. Let me tell you about it. 1 kilowatt hour is how many joule? I mean, if they ask you what is the relation between the commercial unit of electrical energy and the SI unit of electrical energy, अगर ऐसा question आता है तो what is the relation? तो आप directly लिख सकते हो कि 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to 6 joule. And if you have to derive the relation, तो ये 2-3 लाइन की derivation है. Just go through, just see here. 1 kilowatt hour we can write as 1 kilowatt into 1 hour, which means 1 kilowatt is, अब मुझे convert करना है SI unit में. So instead of 1 kilowatt I will write 1000 watt. And time का भी SI unit लिखना है. So 1 hour is 3600 second. So this will become 36 के आगे 1 2 3 4 5 5 zeros. This much joule. So 1 kilowatt hour is equal to this much joule, and in standard form I will write standard form यानी ये number होना चाहिए between 1 and 10, and after that जो बाकी है I'll write in the form of power. So this point is here. So after that I'll get 1 2 3 4 5 6. So 10 raised to 6 joule. So 1 kilowatt hour equal to 10 raised to 6 joule. This is the relation between the commercial unit of electrical energy and the SI unit of electrical energy. तो ये उस क्वेश्चन का पार्ट है. So this is a different thing. So I hope you understood this. So this part I'll erase now so that we can solve the sum here. So in this question I have to find the energy consumed in 2 hours. Energy consumed in 2 hours. So energy is equal to PT, power into time. Power मिली है हमें 1100 watts into time. Time is given as 2 hours. So अगर मैं इसी यूनिट में इसको रखूंगी तो I will get the answer as 1100 into 2, that is 2200 watt hour. So energy consumed in 2 hours will be 2200 watt hour. You can keep it like this also, क्योंकि ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं SI यूनिट्स में. So how will I convert to SI unit? जूल में कन्वर्ट करना है मुझे. So I will write energy is equal to 2200 watt hour. Watt is already the SI unit. Only thing मुझे करना होगा है ये hours को seconds में convert करना है. So for this 1 hour I'm going to write this as 3600 seconds. Okay,
And then 36 into 22. 36 into 22 I'll do. 2 6 are 12, 2 6 are 7, 2 7, 2 9 and 7. 792. So this becomes 792 और उसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 0. So this becomes, ये जो होगा आंसर ऑफ दिस इज इन जूल, जो है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा हमें आंसर, तो ये डेसिमल आना चाहिए 7 के बाद 7.92. And if the decimal has to come here, it will become 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.92 into 10 raised to 6 joule. So this is my answer for electrical energy consumed SI unit में अगर ढूंढना है तो. ठीक है, so दो पार्ट थे इसमें. फर्स्ट आई फाउंड द पावर ऑफ द मोटर और सेकेंड पार्ट में एनर्जी एक वॉट आवर में भी ढूंढ ली हमने और ये SI यूनिट में भी ढूंढ ली. ओके, क्लियर? Let's see the next question is 1 kilowatt hour. अभी हमने ये रिलेशन किया था. What is the relation between 1 kilowatt hour and joule? 3.6 into 10 raised to 6 joule. यहाँ पे तो जो पूछा है यूनिट that is megajoule. So what is megajoule? Megajoule is 1 megajoule is 10 raised to, mega is always 10 raised to 6. ठीक है, 1 megajoule is 10 raised to 6 joule. So here this will become 3.6 megajoule. So answer is first option is correct answer. And one more. We will see the last question for today. Chalo, this is the last question for this session. And again एक छोटा सा numerical है. Resistor दिया है, resistance 10 ohm. And the power supply voltage is given 20 volt. And we have to find the power consumed in the resistor. So power formula अब यहाँ पे V और R दिया है. So we will use this formula directly. So I will get V square 20 into 20 upon R is 10. So my answer is 20 into 2, 40 watts. So second option is the right answer here. Okay students, I hope you understood the topic for today. And this topic also finishes our chapter. लेकिन question answer हम इससे related करेंगे next session में. That will be on Tuesday same time. तो पूरे chapter के question answers या numericals. I think first we'll have a session on numericals alone. And उसके बाद next session हम कर लेंगे of question answers. ठीक है. So in the meantime, you have any questions which you want to get cleared, so write to me in the comment section. So in the next session, I will tell you the answer for it. So thank you for watching and like the video and also share it with your friends. And I'll see you in the next class. Bye bye.